Good morning, students. So, as we are now in chapter number 2, that is the living world, we have discussed a lot of points from this particular chapter. Okay, we have seen characteristics of living things, we have seen what is growth, we have also studied about the food, why the food is necessary for the growth. Okay, then we have seen a process that is respiration process, excretion process. Okay, also, we have seen the responsiveness, which is one of the most important characteristic of the living things also. Okay, and we have seen the reproduction. Now, in this particular lesson, we are going to see lifespan. What is lifespan? So, every living organism have a certain lifespan. Okay, so from the birth to the death of that particular living organism, there is a period, and that period is called as lifespan of that particular living organism. Okay, पैदा होने से लेकर के उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने तक का जो समय होता है, ये जो समय होता है जिस जिस समय के लिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी स्पेसीज हैं, उन सभी स्पेसीज का जो ये लाइफ स्पैन है वो क्या है, अलग अलग है। नाउ एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, एक स्टेज होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए लायक हो जाती है। Later on in life reproduction stage, their organs become weak and still later their life comes to an end. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है वो वीक हो जाती है, उनके ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, और उनका जो स्ट्रेंथ है, बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, कम होने लगता है। एंड एट अ सर्टेन टाइम द लाइफ एंड्स। ओके, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। नाउ इन अदर वर्ड, लिविंग थिंग्स डाई। इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग थिंग जो है वो मर जाता है कुछ समय के बाद। नाउ द लाइफ स्पैन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज अबाउट 12 to 18 years। डॉग का लाइफ स्पैन क्या है, 12 से 18 साल तक एक डॉग सर्वाइव कर सकता है। वाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 years। ऑस्ट्रिच क्या है, बर्ड है। तो जो ऑस्ट्रिच है वो 50 years तक सर्वाइव कर सकता है। You may have wondered what exactly the living things are, how they came into being, and so on. अब हमारे सब मन में ये सवाल उठता है कि एक्चुअली लिविंग थिंग्स है क्या, ये किस तरीके से दुनिया के ऊपर आए, इनका जो जनरेशन जो एक्सपांड हुआ है वो कैसे हुआ। ओके, नए नए स्पेसीज कैसे फॉर्म हुए, ये सब सवाल हमारे मन में है। ओके, now, do you know the lifespan of the giant turtle? Okay, this is a turtle, giant turtle, found in the Galapagos Island in South America is about 170 years. So, giant turtle जो होता है वो 170 सालों के लिए क्या हो सकता है, survive कर सकता है। On the other hand, the lifespan of the mayfly, okay, this particular insect, mayfly, the lifespan of this particular insect is very very less, and it is 1 hour to 24 hours. Okay, so after the birth, this particular species, that is mayfly, can survive for 1 hour to 24 hours. Okay, now this is all about the lifespan. Now we are going to see the origination of this particular living organism or species. Okay, now you may have seen the small compartments of a honeycomb. These compartments are joined together to form a honeycomb. A wall has bricks. To construct a wall, we firmly join the bricks together. Now you can see this particular picture. In this picture, a lot of bricks are joined in a similar fashion to give us the wall. Okay, and here you can see a picture of a honeycomb. Okay, so in a honeycomb there are a lot of compartments. There are a lot of hexagonal rooms. Okay, which are joined together, and those rooms or those compartments form a honeycomb. Okay, now, why these examples are given? These examples are given to convey a cell structure of a particular living organism. Now, see, living things are made of small units called cells.
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, उन सभी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, वो क्या है? सेल है। क्या है वो? सेल है। द स्मॉलेस्ट unit of the smallest unit of any living thing is called as the cell. Okay, so the living things are made of small units called as cells. Okay, this is important sentence. Now, all the actions and processes in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. So हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, हमारा बॉडी जो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, उन सभी प्रोसेस को ठीक से परफॉर्म करने के लिए हमारा जो माइक्रोस्कोपिक सेल है, वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। Okay. Now, some living things are made of a single cell. These are called as unicellular organisms. ऐसे living things जो सिंगल सेल से बने हैं, कितने सेल से? सिंगल सेल से, उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ओके। ऑन द अदर हैंड, द लिविंग थिंग्स that are made of many cells are called multicellular organisms. लेकिन ऐसे लिविंग थिंग्स जो बहुत सारे सेल से बने हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। तो ये जो अमीबा है वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके। पैरामोशियम भी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। whereas this particular insect cockroach, ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। pigeon क्या है? मल्टी सेलुलर है। we human beings are also multi cellular organism. So these are the examples of living things. Okay, these two are the examples of unicellular, whereas these two are the examples of multicellular organisms. Now we can see the multicellular organism with our naked eyes. Okay, we can observe this species with our naked eyes, but we cannot see amoeba and paramecium with our naked eyes. And there's other also, there are more examples of unicellular organism. For example, euglena is there. Okay, then Plasmodium vivax, okay, Salmonella typhi, Lactobacillus, okay, Azotobacter. So there are a lot of examples of unicellular organism. And what is one of the significant characteristic of this particular organism? That we cannot see or observe the unicellular organism with our naked eyes. Okay, हम अपनी आंखों से इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके। So the amoeba and some other microorganisms are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan tree, the onion plant, etc., etc., are the examples of multicellular organisms. Okay. Now, all the characteristics of living things are seen in every cell of living thing. Okay, whether it is a unicellular or multicellular. So the characteristic which is found in the cell, it is same in both the types, in the unicellular also, in the multicellular as well. Okay. Now the cellular structure is the main characteristic of living things. Always remember, the cell structure is considered to be as one of the main and significant characteristic of living thing. So the cell structure of plant is different that of the cell structure of animals. Okay. Animals का cell structure और plant का cell structure क्या होता है? अलग होता है। ओके। लेकिन किसी भी लिविंग थिंग के लिए जो उसका सेल्फ स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके। सो दिस इज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। Now, institutes at work. So there are several institutes in our country, okay, several organizations where we study the species, okay. So the institutes that work for the survey and conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India, that is 1890, established in the year 1890, and the Zoological Survey of India, that is established in the year 1916 respectively. In case you find an unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with these institutes to obtain more information about it. Okay, so these are the institutes which
keep the information, okay, and which try to protect or conserve the animals and species, okay, which are found in India. Okay, so this is about the cell structure. In the next lecture, we are going to study about the useful and harmful living things. Okay, so until then, goodbye.